Hello friends, good morning. Today is 2nd of February 2024. Last day, matlab yesterday I did not do any videos as I was holding a live marathon session of 2 days focusing on Federal Open Market Committee decision. ये जो FOMC का interest था उसके बारे में. This video will be in English, and in this video we are going to take a look at the currency market. So let's तो सबसे पहले जहां पे हम लोग हैं वो है दिस इज द कैलेंडर फ्रॉम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। उसमें ये इवेंट हो चुका है। दिस इज द यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन। इसको लेके हम लोग का लाइव सेशन था और इसमें कई चीज है नोट करने के लिए जो और प्रोबेबली दिस वीडियो नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, वो वाला मिस मत कीजिएगा। डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियो which will focus on some of the odd things that are happening in the market. नेक्स्ट जो हम लोग इम्पोर्टेंट इवेंट था, बैंक ऑफ इंग्लैंड, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग डाउन मूव इन जीबीपी यूएसडी लेटर इन द नाइट, फुल रिकवरी. Then we had ISM manufacturing data, US ISM manufacturing data. This came strong. This should have been dollar positive, but this could not be dollar positive. In next video, maybe we are going to cover why it's not going to, we're not going dollar positive. तो जो हम लोग इसमें अब करेंगे तो हम लोग चले जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। कुछ अलर्ट्स आ रहे हैं, जरूर इसको हम लोग स्टॉक के साथ देखेंगे। Stocks are reaping higher as anticipated. Now this comeback was not fully anticipated. This is a good comeback और ये hide कर देंगे हम लोग इसको. Will bring our indicators. Okay. So we have applied. First, we'll take a look at dollar index. डॉलर इंडेक्स जो हम लोग लास्ट वीडियो किए थे उसमें हम लोग बोले थे कि डॉलर इंडेक्स हैज बिकम स्क्वीज्ड एंड पॉसिबल एक टर्न अराउंड हो सकता है कि इतना स्क्वीज हो गया कि डॉलर का ये जो कैंडल, मतलब फेड पे रिवर्सल आना पॉसिबल, बट फेड पे रिवर्सल अल्टीमेटली आया नहीं एंड द फेड वाज हॉकिश, दो हॉकिश इन इट्स कम्युनिकेशन. The dollar could not hold up, and we are now seeing a sell signal which came yesterday, largely in the evening. Today, we are seeing a follow-up candle. We have RSI cross, so dollar probably is turning the corner. Background is still yellow, means we don't have the short-term trend push. So maybe we can wait for the short-term trend to turn bearish before we start selling the US dollar. Sorry for that. Uh, just a moment. Yeah. So now we'll look at the Euro USD. Euro USD was in a bearish mode, but it was very close to support. Now we are seeing for the first time a green, half a green candle, means this is a strong comeback, but the candle is not fully ready yet. We need a minimum full green candle to do any kind of buy trading. तो यहाँ पे एक अलर्ट लगा दीजिए, प्राइस एक्शन बुलिश। मैं डेली कैंडल पे ही ट्रेड कर रहा हूं। सो प्राइस एक्शन जब बुलिश होगा देन विल लुक एट इट। गल्फ गल्फ ऑयल में अलर्ट आ रहा है, देखता हूं इसको बाद में। वी नीड टू गिव सम टाइम टू द मार्केट टू एडजस्ट बिफोर वी डू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। जीबीपी यूएसडी बहुत इंटरेस्टिंग, कल फुल बियरिश कैंडल था। टुडे इट वाज, वी टॉक्ड अबाउट कि बैंक ऑफ इंग्लैंड का इवेंट है। इवन हम लोग का जो लाइव सेशन चल रहा था, आई वांट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स बी वेरी केयरफुल बिफोर होल्डिंग अ पोजीशन. सो दिस वाज अ स्पेकुलेटिव वन। ये बाय द फुल रेड था एंड ये पूरा रिकवर हो गया येस्टरडे। आज एक बड़ा ग्रीन कैंडल। इसमें जंप करके बाई नहीं करना चाहिए। पॉसिबल है कि बढ़े,
बिकॉज समथिंग ऑड इज हैपनिंग, डॉलर इज वीक, इंटरेस्ट रेट्स आर डाउन। कल रात को इंटरेस्ट रेट डाउन था ओवरऑल यूएस का देखा जाए तो। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हैज फॉलन शार्पली, दिस एक्चुअली ब्रॉट डाउन द डॉलर। उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड का बस ये कमेंट्स था, दे आर नॉट रेडी टू कट डाउन रेट्स। ना जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड रेट कट नहीं करने वाला है, फेड भी बोला है रेट कट नहीं करना है, सो फंडामेंटल रिमेन्स मिक्स सिनारियो। सो इस पेयर को फंडामेंटल पुश है नहीं इमीडिएटली, तो this is a buy signal, a buy candle. I will prefer to wait for this break before I start going long. पहले एक में जब लॉस हुआ है इसमें, तब आई शुड बी सेकेंड ट्रेड जो उसमें केयरफुल होना चाहिए मुझे। सो उस हिसाब से तो डेफिनेटली, एंड मार्केट में जो ऑड बिहेवियर हो रहा है, मतलब कुछ अंडरलाइन चल रहा है, उस वो भी एक रीजन है ये केयरफुलनेस का। बिकॉज द डॉलर वीकनेस, ये जो डॉलर वीकनेस कल हम लोग देखे रात को, दैट वाज ड्रिवन बाय द फैक्टर दैट इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन। Now, when Federal Reserve has hinted that it's not going to cut interest rate, a long-term interest rate cut decline is definitely significant. So next video, we are going to talk about it. Next is currency. GBP USD. Now we'll look at USD JPY. इसमें मैं एक short trade initiate किया हूँ. This is going well. It can go further well. Problem is it is very close to key support. Euro yen में भी ये key support से recovery हुआ है. If you look at this, it reached a key support, then the momentum has turned flat. Euro yen में हम लोग ये level, it has come back. Let's bring it the candle. ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट लेवल से ये पहला एक कम बैक करेक्शन। अभी तक स्क्वायर ऑफ करने का सिग्नल तो आया नहीं, बट एक कम बैक का सिग्नल क्लियरली आ रहा है फ्रॉम यूरो येन एट दिस लेवल। सो सिमिलरली यूएसडी जेपीवाई और डॉलर येन भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास है। 144 पॉइंट, मतलब 145, स्पेशली दिस वन वेरी स्ट्रॉन्ग 146, और यहाँ पे और एक 146.4 से 146.5, 146, और यहाँ पे अराउंड 145.5। एवरी 50 बेसिस पॉइंट्स पे, सॉरी 50 पिप्स पे एक सपोर्ट आ रहा है। अब हम लोग आईएनआर पेयर को एक बार देख लेते हैं। यूरो आईएनआर, इट वाज अ गुड बियरिश पेयर, इट वाज मूविंग गुड, बट यस्टरडेज dollar weakness led a comeback to the euro, and we are seeing a green socks, but background is still red, means short trend is still bearish, but यहाँ पे अब consolidation होने का probability बढ़ चुका है। सो यूरो आईएनआर जो हम लोग इस जगह से सेल कर रहे हैं, वो अब प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा टाइम आ गया। लास्ट जो लेवल था बेचने का, वहां उसके बाद देखा जाए, दिस इज द फर्स्ट ग्रीन कैप्स एंड दिस इज just the day starting. Green caps छोटा हो सकता है, but this is so far the strongest green caps. और more importantly, ये आ रहा है एक very important support zone के पास से, ये flat zone तक reach हुआ, then it is coming back. So इसको थोड़ा importance देके partial profit booking और sideline में रहना ही मेरा strategy होगा। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं जीबीपी आईएनआर। GBP INR candle has completely reversed, so any kind of short position, this I'll have to close down. So GBP INR, all if you have positional short, आप उसको क्लोज करना पड़ेगा। Now इसको देखा जाए तो इस जगह पे we were having बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड इस दिन एक्चुअली मैं जीबीपी आईएनआर कल शॉर्ट किया था। जीबीपी यूएसडी जैसे ब्रेक किया, वी वर आई वाज लुकिंग फॉर जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर जो शॉर्ट किया, वी वर देयर लाइव मार्केट, इट वाज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट वेरी की लेवल। नाउ इस जगह पे मैंने सजेस्ट किया, जो लोग अटेंड कर रहे थे, कि प्रॉफिट बुक तो जरूर कर लेना चाहिए, स्पेशली जो लोग इंट्राडे गए हैं, बिकॉज वी हैव गॉट अ सॉलिड मूव एंड अ मेजर रिस्क इवेंट कमिंग अप। बट इस जगह पे मैंने जो अपना फोमो पोजीशन लिया था, वो मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया।
तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ये जानते हुए भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, आज देखो आज तो लॉस जा रहा है, तो अब मैं अब क्यों नहीं बुक की। मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं डेली चार्ट में, और ऐसे ऐसे इवेंट आते रहेंगे। मैं कभी एक मतलब जैसे शैडो प्रैक्टिस करके एक बैट्समैन ग्रेट बैट्समैन नहीं बन सकता। मैं ये सब इवेंट से छुप के, ये जैसे ये इवेंट रिस्क है, ये वैसे ये इवेंट रिवॉर्ड भी है। सो some days they can take your money, but some days they can give you a very good start. So these positions, like यहां से जब मार्केट रेंज में जा चुका है, दिस काइंड ऑफ फोमो टेस्टिंग मुझे डायरेक्टली विसरली मार्केट को फील करने दे रहा है। आई एम डायरेक्टली फीलिंग व्हाट्स गोइंग ऑन विद द मार्केट। जो जैसे शैडो प्रैक्टिस करके बैट्समैन नहीं बन सकते, हम लोग भी सिर्फ पेपर ट्रेड करके जल्दी जल्दी क्लोज करके उसमें कर नहीं सकते। दिस कुड बी जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ रन। ये हम लोग एंड पे नहीं, एक कंसोलिडेशन के बाद पॉसिबिलिटी ऑफ एक फ्रेश ट्रेंड के अटेम्प्ट ले रहे हैं। So this kind of attempt as a positional trader, I'll continue to take. Today, the system is asking me to square off, and it's quite clear. First of all, GBP girta agar Bank of England dovish hota. Bank of England was not dovish, but more importantly, dollar was bearish. That was off guard kind of. Bank of England ka risk was accounted for. Dollar ka sell off was not fully accounted for. और ये इस टाइम पे होना, जैसे जैसे हम लोग साइकिल के एंड पे जा रहे हैं, दिस काइंड ऑफ हैपनिंग्स विल बी कॉमन। सो अभी अभी और आगे वील हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस अंडरगोइंग चेंजेस। ये जीबीपी आईएनआर के बाद हम लोग देखेंगे जेपीवाई आईएनआर। जेपीवाई आईएनआर का तो एग्जिट हो चुका है, कल ग्रीन कैंडल भी था, आज भी ग्रीन कैंडल परसिस्ट कर रहा है, बट अभी तक सेकंड सिग्नल, दिस बाय सिग्नल हैज नॉट कम येट। सो वी कैन वेट, इट्स बेटर विल बी टू वेट बिकॉज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस आर कमिंग लाइक यूएसडी जेपीवाई। मैं ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका हूं यूएसडी जेपीवाई में, and it is so additional further position on JPY. I'm not sure, but as its risks are happening, JPY can significantly gain from these underlying changes क्योंकि JPY है एक सेफ हेवन करेंसी। नेक्स्ट हम लोग जिसको देखेंगे वो है एक्सचेंज यूएसडी और इंटरनेशनल गोल्ड। इंटरनेशनल गोल्ड में कल हम लोग एग्जिट कर लिए थे बिकॉज ऑफ द रिस्क इवेंट और एक एग्जिट सिग्नल भी, बट बाद में डॉलर का वीकनेस हैज पुश द गोल्ड हायर हियर, एंड ओवरऑल वी मे सी फर्दर कम बैक on the gold because this is coming from a very important level, 2037 level. If gold sustains, we are going to see bigger rally. So gold में कल जो early FOMO position that I exited, later on the signal आया, but I wanted to wait for a whole day. This was the signal. After that, dollar weakness was there, but I preferred to wait for the whole day, and then we will look at this and look for further trading. आज 125 minutes में जब buy signal आ जाएगा, that could be a point of entry. आज 125 मिनट में ये जो रेड सिग्नल है एसटी मोमो, इस पे अलर्ट लगा दीजिए कि शॉर्ट मोमेंटम बुलिश। ये जब शॉर्ट मोमेंटम ये 125 मिनट यूज कर रहे हैं टू फाइन ट्यून द एंट्री इन द डेली टाइम फ्रेम, बट स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे टुवर्ड्स 2037। दिस कैन बी अ वेरी गुड राइड। बट इसमें डॉलर वीकनेस इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे इज एक्सचेंज यूएसडी और इंटरनेशनल सिल्वर। International silver, I did not do anything. I neither did on the sell side, neither on the buy side. But for the first time now, short-term trend is turning bullish. Background is green. I might look for buy opportunities in silver now, but I would prefer to have the momentum in my favor. So in 125 minutes, 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 125
I would want the probability of buy trade to go up. That can be, ये जो signals आ रहे हैं, they will be valid only till closing. Let's look at XAU USD. It has not come yet. Yeah, short term momentum is bullish. Now, can we enter? We can enter only at a price action bullish. That is the minimum requirement, which is the full green candle. तो ये अलर्ट लगा दिया, देन एक्सएयू यूएसडी वी विल एंटर. सिमिलरली एक्सएयू यूएसडी, यहाँ पे प्राइस एक्शन बुलिश, ऑल्ट ए, प्राइस एक्शन जब बुलिश होगा और साथ में शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, उस जगह पे हम लोग एक्सएयू एंटर करेंगे. ये दो ट्रेड आज रिलेटिवली दिख रहा है कि एक से जी एक इनिशियल अर्ली, आप बॉटम हंटिंग काइंड ऑफ अर्ली बाई फेज में जा रहा है पॉसिबिलिटी, बट दिस इज अगेंस्ट द ट्रेंड. तो सिल्वर छोटा क्वांटिटी, बट गोल्ड ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन क्रॉस कर चुका है. 2037 बहुत बढ़िया सपोर्ट हुआ है. सो गोल्ड में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आ सकता है. नेक्स्ट विल लुक एट द यूरो जीबीपी, which is a rangish pair. I don't trade this much because euro and GBP, they tend to move in the same direction. It is very rangish, but it has given some good ride on the downside. Recent days में downside में अच्छा ride देने के बाद कुछ correction, candle छोटा हो रहा है, it's consolidation दिख रहा है more. USD INR is another pair which I prefer to use. I prefer to use as to create something cross pair, but USD INR का ये जो weakness कल हम लोग देखे, मतलब INR was able to materialize strength on this interest rate drop. So that is one positive for INR. So USD INR finally could start to see some moving on the downside rather than on the upside. Sell trade win probability is quite high. Finally INR could be upside. RBI gain करने नहीं दिया, और currently जो fundamental changes हो रहा है underlying, INR actually can benefit from there. Indian economy has been quite stable and we do not have currently undergoing any major risk, except एक risk India में, that is some of the private companies that are highly rated like Adani. So during this bust phase, that may not bear well for Adani or the banks or the corporations that have insured those debt. I'm not nothing about particular about Adani. Anyone with high debt during this phase, foreign debt, they could be in a trouble. Next is जो हम लोग देखेंगे is the Euro yen pair or the pound yen pair, जिसको फॉरेन एक्सचेंज में yippee and guppy बोला जाता है. यहाँ पे we had a good down move. Now the candle is retracing. We are not in the buy mode. 125 minutes में देखा जाए तो we had a comeback largely because of dollar weakness drove euro higher. That's why, but this is, I'll not prefer not to buy this pair yet. अभी भी यूरो येन बाई करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं. रादर इसको स्क्वायर ऑफ करके जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको स्क्वायर ऑफ करके साइड लाइन में बैठना ही मेरा प्रेफरेंस ट्रेड होगा. जीबीपी जेपीवाई और द पाउंड येन. पाउंड येन एक सिग्नल देने के बाद ये भी रिट्रेस कर रहा है, बट पाउंड येन इज स्टिल अ बिट फार अवे फ्रॉम दिस. आई डोंट थिंक ये पाउंड अभी भी रेंज में है. इसका ये जो मूव हुआ कल रात सस्टेन ना हो सकता है कि जीबीपी आईएनआर वंस अगेन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, बट सेल का नहीं सोच रहे. इट कुड बी कंसोलिडेशन. तो थोड़ा जो लोग एनीवन मेकिंग लॉस इन जीबीपी आईएनआर शॉर्ट में गेन सम प्रॉफिट, बट इट इज नॉट अ शॉर्ट मूविंग. बट अदर जीबीपी जेपीवाई भले ही ये करेक्शन हो रहा है, वी माइट स्टिल गो फॉर, इफ सॉरी बैकग्राउंड कलर अगर रेड हो जाता है, शॉर्ट ट्रेंड bearish, then we can once again speculate. और इसके साथ साथ आप चाहे तो नॉर्मल कैंडल स्टिक्स भी यूज कर सकते हैं. उसके साथ भी ये सेटअप इस्तेमाल किया जा सकता है.
So you can see normal candlesticks में we have a hammer. नॉट नेसेसरली हैमर मतलब ये सुपर सक्सेसफुल हो जाएगा, हैमर कैन फेल टू। सो यहाँ पे इस लेवल का ब्रेक होना इंपॉर्टेंट रहेगा 185.9 और रादर ये ग्रीन चैनल के नीचे 185.7, तब जाके हमें कुछ एश्योरेंस मिल जाएगा कि यस दिस इज मोर टू द सेल साइड। और आज का कैंडल नया तो लो नहीं बना रहा है, सो इट्स अ रिट्रेसमेंट। So we have to be very careful while adding fresh position. फ्रेश अगर शॉर्ट के तरफ खेलना है तो 125 मिनट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है फाइन ट्यून करने के लिए पोजीशन। तो यहाँ पे अभी फुल्ली बैकग्राउंड ग्रीन, तो सेल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। रादर यू वी कैन वेट फॉर शॉर्ट ट्रेंड न्यूट्रल, मतलब ये ग्रीन खत्म हो जा रहा है, देन विल सी किस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन आ रहे हैं। तो दैट्स इट। तो समराइज करे तो देखा जाएगा यहाँ पे बैकग्राउंड येलो दिखा रहा है, बट दिस इज नॉट येट एनी सिग्नल इज वैलिड ओनली ऑन क्लोजिंग। क्लोजिंग के बिना कोई भी सिग्नल वैलिड नहीं है। सो ब्रॉडली देखा जाए व्हाट वी आर सीइंग मिक्स मार्केट, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आ सकता है यूरो यूएसडी में, बट यूरो का जो राइज हुआ है दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द डॉलर वीकनेस इंस्टेड ऑफ यूरो स्ट्रेंथ। बट अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया जहां से वो आ रहा है, एंड यूरोपियन इकोनॉमी का इंप्रूवमेंट दैट कैन बी वन फैक्टर जो यूरो को फ्यूल कर सकता है। So all the best from my side to your trading, to help you out, the Rainbow users. I hope this video helps you. If it helps you, don't forget to like and subscribe. So all the best to your trading and happy trading.